everyone, how are you? I hope that you all are fine. So in this video we will discuss about laws of vector addition. Okay. So let's see. Laws of vector addition. Okay. So laws of vector addition होता क्या है? पहले ये देखते हैं हम लोग. First of all, we draw any one vector draw a second vector on the head of first vector. Okay, again draw third vector on the head of second vector and so on. The line joining the tail of the first vector to the head of the last vector. This law is called laws of vector addition. Okay. तो laws of vector addition क्या होता है? पहले तो first of all we draw any one vector. Okay. And again draw second vector on the head of first vector and draw third vector on the head of second vector and so on. The line joining the tail of the first vector to the head of the last vector gives resultant vector. Okay. Now this law is called the laws of vector addition. Okay. This law is called laws of vector addition. Okay. So first of all we have to draw any one vector. सबसे पहले हम लोग को एक वेक्टर ड्रॉ कर लेना है. ठीक है. एरो क्या बता रहा है? हमारा डायरेक्शन बता रहा है. ठीक है.
ये हो गया हमारा फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। और इसके बाद है हमारा ड्रॉ सेकंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, ओके। अब हम लोग को सेकंड वेक्टर ड्रॉ करना है, कहाँ से? फर्स्ट वेक्टर के हेड से, ओके। तो ये होता है टेल हमारा, हम लोगों ने इसे पहले वाले वीडियो में देखा था। इस पॉइंट को हम लोग इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और वी कैन से टेल, और ये हेड होता है, ठीक है, हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। तो ये हो गया हमारा सेकंड वेक्टर, ठीक है। उसके बाद है हमारा ड्रॉ थर्ड वेक्टर ऑन ऑन द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, ठीक है। तो सेकंड वेक्टर के हेड पे हम लोग को थर्ड वेक्टर ड्रॉ करना है। तो ये हो गया हमारा सेकंड वेक्टर हेड, ये हो गया हमारा थर्ड वेक्टर, ठीक है, एंड सो ऑन। उसके बाद में बहुत सारे वेक्टर हो सकते हैं, हमारा फोर्थ वेक्टर हो गया, ठीक है। सो अब क्या कहता है, द लाइन जॉइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर गिव्स रिजल्टेंट वेक्टर, ओके। सो फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हमारा हेड, ओके, ये हमें क्या देता है? रिजल्टेंट वेक्टर देता है, ठीक है। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? हम लोग सम, ओके, सम एडिशन, इसका मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट होता है, ठीक है। राइट, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू आवर फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर प्लस एंड सो ऑन फोर्थ वेक्टर, ओके। सो आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा कि लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? सबसे पहले हम लोग को कोई एक वेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग को सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे हम लोग को सेकंड वेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। वैसे ही हमें सेकंड वेक्टर के हेड पर थर्ड वेक्टर ड्रॉ करना है, और फिर फोर्थ वेक्टर के, सॉरी, थर्ड वेक्टर के हेड पे फोर्थ वेक्टर ड्रॉ करना है। उसके बाद जो फर्स्ट वेक्टर का जो हमारा टेल होता है और लास्ट वेक्टर का हेड होता है, ये लाइन हम लोग क्या देता है? रिजल्टेंट देता है, ठीक है। रिजल्टेंट इट मींस यू कैन से सम, ओके। दिस लॉ इज कॉल्ड लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा कि लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं पिछले वाले वीडियो से रिलेटेड, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है, if force is equal to 2 Newton at at 30 degree north of east, then which of the following is our correct, okay. So here our first option is equal to 4 Newton at 60 degree east of north minus 4 is equal to 2 Newton at 30 degree south south of west, okay. Vector by 2 is equal to 1 Newton at
degree west of south. Okay. Now last option is force F2 is equal to 1 Newton at 30 degree east of north. Okay. So ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है. That if force is equal to 2 Newton at 30 degree north of west. Okay. तो चलो सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. East, west, north and south. Okay. अब क्या कह रहा है? Force is equal to 2 Newton at 30 degree north of west. Okay. मैंने बताया था कि जो लास्ट में होता है उसी के साथ एंगल बनता है, ठीक है. तो 30 डिग्री किसके साथ बनेगा? हमारा ईस्ट के साथ बनेगा, ठीक है. तो ये हमारा 2 न्यूटन, ये एंगल होगा हमारा 30, तो ये होगा हमारा 60. ओके. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, ठीक है. अब देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है. सो हमारा पहला ऑप्शन है 2 into force is equal to 4 Newton at 60 degree east of north. ओके. तो इधर 2 मल्टीप्लाई में डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, 2. ओके. सो ये फोर्स इज इक्वल टू 2 Newton at 60 degree east of north. ओके. ये हमारा सही है क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू 2 Newton at 60 degree east of north. ओके. नॉर्थ के साथ हमारा 60 डिग्री बन रहा है. ओके. एंड वन विच इज रिटन इन लास्ट, द एंगल इज फाउंड विथ one with which the angle is formed is written in last. Okay. So एंगल किसके साथ हमारा बन रहा है? नॉर्थ के साथ बन रहा है, ठीक है. 60 डिग्री नॉर्थ के साथ बन रहा है. तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. हमारा बी ऑप्शन है माइनस दिया हुआ है, ठीक है. तो माइनस दिया हुआ है तो माइनस इट मीन्स इसका अपोजिट कर देते हैं, ठीक है. तो ये हो गया हमारा फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन, ठीक है. ये एंगल हो गया हमारा 30 और ये एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है. सो अब क्या कह रहा है? फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन एट 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट. ओके. 30 डिग्री वेस्ट के साथ हो रहा है, तो ये ऑप्शन में हमारा करेक्ट, ठीक है. तो मैं यहाँ पे जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है. 2 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन एट 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ. ओके. 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ के साथ हमारा 60 डिग्री बन रहा है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है. लास्ट ऑप्शन है फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन एट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. ओके. नॉर्थ के साथ नहीं, इधर ये ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है. क्यों? क्योंकि 30 डिग्री किसके साथ बन रहा है? ईस्ट के साथ बन रहा है, लेकिन नॉर्थ के साथ, ठीक है. सो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है. तो इसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सा हो गया? ए, बी, सी. ओके. ठीक है. तो तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. सो इस वीडियो में हम लोग ने देखा कि लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है. लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ एनी वन वेक्टर एंड ड्रॉ सेकंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ड्रॉ third vector on the head of second vector. Okay. And so on. And the line joining the tail of the first vector to the head of the last vector, okay, gives result
resultant vector. This law is known as our laws of vector addition. ठीक है. सो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? सबसे पहले हम लोग को कोई भी एक वेक्टर ड्रॉ कर लेना, ठीक है, और उसके हेड पर हम लोग को सेकेंड वेक्टर ड्रॉ करना है. देन अगेन हम लोग को थर्ड वेक्टर ड्रॉ करना है. किसके हेड पे? सेकेंड वेक्टर के हेड पे हम लोग को थर्ड वेक्टर ड्रॉ करना है. सो फिर ऐसे ही एंड सो ऑन, इट मीन्स इसी तरह, ठीक है. और हम लोग जो फर्स्ट वेक्टर का जो टेल होता है और लास्ट वेक्टर का जो हमारा हेड होता है, वो लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? रिजल्टेंट कहते हैं, ठीक है. और रिजल्टेंट का सिंपल मतलब हो गया सम, ओके, और वी कैन से एडिशन, ठीक है. और उसके बाद फिर हम लोग ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया. सो आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन और ये क्वेश्चन, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.